Now, so far we had looked into the potentials. Another important aspect which is closely related with corrosion process is the corrosion rates. Half cell potentials, they basically represent the magnitude of a driving force or the tendency for the occurrence of a particular half cell reaction. And although these potentials may be used to determine the spontaneous reaction directions, they provide no information on corrosion rates. कितनी तेजी से कोई reaction होगा इसके बारे में potentials don't give you any idea. And even if you have computed the potential for a specific corrosion situation using the Nernst equation, and the potential comes out to be very large number, the reaction may occur only at an insignificantly slow rate. There is a possibility कि reaction हो बहुत ही आहिस्ता as compared to the large potential that is there. So from the point of view of engineers or mechanical engineers in specific, we are basically interested in predicting the rates at which the system corrode. इससे ज़्यादा कि reaction direction क्या होगी, the important thing is how fast or how slow the reaction would actually be taking place, because based on that your decision would be affected. Does that make sense? सर ये समझ नहीं आया, थोड़ा सा रिपीट कर दें. देखें, एक चीज ये है कि आपको ये पता हो कि अगर if you make a pair of different metals in their respective ions और आप कनेक्ट करें तो एनोड क्या होगा और कैथोड क्या होगा, या which one of the two would be corroding and which one of the two would be in a reducing atmosphere. But how quickly the process would be taking place or how slowly this process would be taking place is the concern which is much more important as compared to the cell potential. All right. All right, sir. ठीक है. So the corrosion rate or the rate of material removal as a result of the chemical reaction is an important corrosion parameter. This rate is basically expressed in terms of corrosion penetration rate or the thickness loss of material per unit time. So far हमने ये नहीं देखा था कि मटेरियल कितनी तेजी से एक खास वक्त के अंदर कोरोड हो रहा है या नहीं हो रहा. तो जितनी तेजी से कोरोड होगा उतना आपके लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न ज्यादा हो जाएगा. ऑलराइट. Are you guys there? सर इससे हमें पता चलेगा ना कि मतलब कि एक मटेरियल कितनी जल्दी करोड होता है तो हम उसको कितने मतलब कि उसको प्रिवेंट किस तरह कर सकते हैं. प्रिवेंट किस तरह कर सकते हैं या उसको रिप्लेस कितने अरसे के बाद करना है. दिस इज जी दिस इज द डिसीजन क्राइटेरिया जो कि प्रैक्टिकली इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर? यस सर. तो corrosion penetration rate calculate कैसे होता है? It is being calculated using the equation that I have shown to you, Kw over rho AT. Now W क्या है इसके अंदर? W is the weight loss in a given amount of time t. All right. So if you see, W is the weight loss after the material has been exposed to the environment, corrosive environment, for the time t. Clear? Yes, sir. Rho represents the density of the material that has been exposed to the corrosive environment, and A represents the area of the material that is in contact with the corrosive environment or exposed area. Clear? A क्या चीज है? A is the area that has been exposed to the corrosive environment.
सारा सरफेस एरिया नहीं, वो एरिया जो कि कोरोसिव सर वो इन्वायरमेंट तो के ए साथ, है ना, ए है, मैं के की बात कर रहा हूँ, के। के विल कम टू नो ऑफ के। के इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट। जी, that is based on the system of units that are that you are using. K is a constant and its magnitude depend on the system of units you are using. ठीक है आसानी सर। के लिए आपकी, there are two kinds of units that are being used. MPY, which is mils per year, and millimeter per year. These are the units that are being used. MPY क्या होता है? We'll look more into it. Agar we have the units as MPY, the K value would be 534 and the respective variables would be in the form of milligrams, weight, density would be grams per centimeter cube, area would be inch square, and time would be in hours. Similarly, if you have to express in millimeter per year, you would use the K value of 87.6, weight would be in milligrams, density grams per centimeter cube, area would be centimeter square, and time would be in hours. Clear enough? जी सर। यस सर। Acha. What is MPY? MPY is mils per year, or it is milli inches per year. 1 mil is 0.001 inch, one thousandth of an inch. So MPY is mils per year or milli inches per year. Clear? जी सर। ठीक हो गया? मिलीमीटर पर। No, not millimeters. It is mils per year, which is milli inches. ओके ओके सर। All right. And for general purpose, if your CPR rate is less than 20 mpy, which is mils per year, or 0.5 millimeters per year, it is considered as acceptable for most of the applications. Not for all of the applications, but for most of the applications. Clear enough? Sir, corrosion penetration rate is actually the rate at which the material corrode. Material is losing its thickness, yes, per Yes, sir. unit time. Yeah. Okay. Okay, sir. Now, you can also express this corrosion penetration rate in terms of current. If you have the current value known to you, the current generated due to the corrosion, you can use this current density. I, small I is current density, that is current per unit area. If you have that value, you can use that value, the number of electrons associated, and the Faraday's constant to find out the corrosion rate in moles per meter square per second. All right. सर ये ऊपर करोजन रेट आई के और बारे में बता करोजन, दीजिए। जी सॉरी सर करोजन रेट और करोजन पेनिट्रेशन रेट एक ही चीज है? एक ही चीज है, it's just the units that are different. I is Sir, what was current. I? Yeah. I is current per unit surface area of the material which is corroding. Okay. ठीक है? All right. All right. Now we move on towards different forms of corrosion that are there. We'll look into the two forms today, and the remaining forms we'll discuss on Monday. So these are basically some of the forms: uniform corrosion, galvanic corrosion, selective leaching. This is one category. And then you have stress corrosion, crevice corrosion, pitting corrosion, and intergranular corrosion. These are the other forms. So we'll start looking at these forms one by one, and we'll discuss the first two kinds, the uniform corrosion and the galvanic corrosion today. Uh, Starting with the uniform corrosion, as the name suggests, it is uniform attack is there that occurs with equivalent intensity over the entire exposed surface and often leaves behind a scale or deposit. A scale is basically the product of corrosion, which in steels is known as rust. So uniform corrosion is basically
occurring or taking place over the entire surface that is being exposed, and it is taking place roughly uniformly throughout the surface. All right. In microscopic sense, oxidation reduction reactions occur randomly over the entire surface. So the corrosion is taking place throughout the surface. Familiar examples include general rusting of steel and iron and the tarnishing of silverware. So if you look at this pressure vessel over here, you would see that this reddish brown color rust is being formed on top of the entire surface of this pressure vessel. This is basically the uniform corrosion that is taking place uniformly over the entire surface. Clear? Yes, sir. This is the most common form of corrosion that takes place. और आसानी इसमें क्या है कि it is relatively easily measured and predicted, making disastrous failures relatively rare. So if you see that your material is getting corroded, you can take the preventive measures effectively since it is visible to you, visible to the naked eye. All right. Yes, sir. Now, galvanic corrosion, how do you define galvanic corrosion? Galvanic corrosion occurs when two metals or alloys having different compositions are electrically coupled and are exposed to an electrolyte. So these are the conditions for galvanic couple or galvanic corrosion. The more active metals or alloys of the two is corroded preventionally by galvanic corrosion. So there are two metals. One is relatively noble to the second one. They are electrically connected and exposed to an electrolyte. As a result of this, the less noble one or the more active one would start corroding. Clear? This less noble one would start acting as the anode and the more noble one would start acting as the cathode. Clear नोबल क्या enough? मतलब है? Noble से मुराद ये which is more cathodic. सही सर. अगर आप EMF सीरीज या गैल्वेनिक सीरीज याद करें तो there were elements or metals or alloys that were listed down with regards to their nature of reactivity. और सर ये जो है वो इलेक्ट्रिकली कपल्ड है, तो सर ये कांटेक्ट के अलावा अगर हम किसी तार से जोड़ते हैं तब भी हो सकता है. ऐसा हो सकता है लेकिन नॉर्मली एप्लीकेशंस में ना इफ यू हैव प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस वहां पे आप तार से जोड़ते नहीं है. यू डोंट मेक अप एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल योरसेल्फ. वो तो होता ये है कि कोई ज्वाइंट है, कोई नट बोल्ट हुआ है, दो डिफरेंट मटेरियल्स वेल्ड हुए हैं, दो डिफरेंट मटेरियल्स, सो दे आर इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड. ठीक है सर. ऑलराइट, we'll look at an example. For galvanic corrosion to occur, three conditions must be present. वो तीन conditions क्या हैं कि electrochemically dissimilar metals must be present, the metals must be in electrical contact, and the metals must be exposed to an electrolyte. So if you look at this image, here you have an image. Let's say this nut and bolt is made up of, let's say, medium carbon steel, and this body is made up of HSLA, which is high strength low alloy steel. Though are different chemical compositions. अब इसमें आप ये देखें कि electrochemically dissimilar metals, are they present? जी सर. Are they in electrical contact? जी सर, एक दूसरे के अंदर जुड़ा है. And is there any electrolyte present? Electrolyte क्या है? सर बारिश हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. Moisture in the air. Moisture in the air. Air itself has moisture. तो जो moisture entrap हो जाएगा, that is also the electrolyte that is present. Clear? जी सर. तो तीसरी Yes, कंडीशन sir. सेटिस्फाई हो गई. अच्छा, इसमें
if I say that if I ask you कि एनोड और कैथोड क्या होगा, देख के आपको क्या लग रहा है? Which one is the anode and which one is the cathode? सर ये गोल्ड ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, तो ये क्या होगा? सर एनोड कैथोड मुझे जी सर बोल्ट एनोड होगा। वेरी गुड। और सर ये जो नट है ये कैथोड होगा। जी जो बेस प्लेट है वो कैथोड है यस और सर। नट बोल्ट जो है दैट इज एन एनोड। क्लियर? जी अच्छा सर। यस सर। ठीक हो गया। नाउ सिवियरिटी ऑफ गैल्वेनिक कोरोजन कि कितनी तेजी से ये कोरोजन होगी विल डिपेंड अपॉन दीज फैक्टर्स। relative potential difference between metals in galvanic series के अगर दो metals हैं, एक noble है एक active है, this is one condition one situation, और एक condition ये है कि इस series में this is the noble and active metal, the second situation। किस में severity ज़्यादा होगी? सर ये रिपीट कीजिएगा प्लीज। एक ये कंडीशन है कि योर मेटल इज नोबल ओवर हेयर रिप्रेजेंटेड बाय एन एंड द एक्टिव मेटल इन द सीरीज इज ओवर हेयर, दिस इज वन सिचुएशन। द अदर इज कि इस रिएक्टिविटी सीरीज में योर नोबल मेटल इज सिचुएटेड ओवर हेयर और एक्टिव मेटल इज सिचुएटेड ओवर हेयर। तो कंडीशन 2 में ज्यादा होगा। कंडीशन 2 में सिवियरिटी ज्यादा होगी सर 1 में होना चाहिए क्योंकि उसमें डिफरेंस वहाँ में काफी है। ज्यादा होगी, गैप ज्यादा है। बिल्कुल। यस सर। तो जिसमें रिलेटिव पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है उसमें सिवियरिटी ज्यादा होगी। So condition 1 would be more severe. Second is area ratio of anode to cathode. तो एक मेरे पास कंडीशन ये है कि कैथोड कंडीशन है जी इसमें मतलब कि डिफरेंस उनमें ज्यादा है तो इसलिए उनमें ज्यादा हो जाएगी। जी बिल्कुल कोरिजन। यस जी सही है। सेकंड इज आई हैव टू सिचुएशन। सिचुएशन 1 ये है कि मेरा कैथोड फिक्स्ड एरिया है, एनोड का एरिया चेंज हो रहा है। सिचुएशन 2 ये है कि कैथोड का एरिया फिक्स्ड है एंड एनोड एरिया इज लेस देन in the case where I have or as compared to the first case। फर्स्ट केस में एनोड का एरिया ज्यादा है एज कंपेयर टू द सेकंड केस। तो किस केस में एक सिवियरिटी ज्यादा होगी? सर जिसमें एनोड का एरिया ज्यादा है। जिसमें एनोड का एरिया कम है। जिसमें एनोड का एरिया कम होगा उसमें सिवियरिटी ज्यादा होगी। छोटे एरिया में से अगर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हैं तो वो, और बड़े एरिया में से इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हैं तो यहाँ पे इफेक्ट कोरोजन का कम होगा, छोटे एरिया में से इफेक्ट ज्यादा होगा। क्योंकि मेरे पास अगर मटेरियली कोरोड होने के लिए कम है तो वो बहुत तेजी से कोरोड होगा एज कंपेयर टू अगर मेरे पास एरिया एनोड का ज्यादा है। क्लियर? यस सर। ओके सर राइट। एंड थर्ड थिंग इज कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। जितना इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा कंडक्टिव होगा उतना आयन ट्रांसफर जो है तेजी से होगा, तो कोरोजन प्रोसेस भी तेजी से होगा। क्लियर? सर जो सेकंड केस आपने बताया है उसमें कैथोड का क्या डिपेंडेंस होगी एरिया? कैथोड देखिए ना, अगर मैंने कंपेयर करना है एनोड के एरियाज को तो आई हैव टू कीप द कैथोड एरियाज फिक्स्ड। ये तो रिलेटिव चीज है ना। सर अगर हम एनोड के एरिया फिक्स कर दें और कैथोड को डिफर करें तो ये भी सही होगा? हाँ लेकिन फिर आप कैथोड का एरिया क्या चाहेंगे? प्रेफरेबली क्या चाहेंगे कोरोजन कम करने के लिए? सर कैथोड का ज्यादा? नहीं, कैथोड का एरिया कम करेंगे आप। नहीं, कोरोजन कम करने के लिए तो फिर कम होगा, लेकिन कोरोजन ज्यादा करने के लिए तो फिर ज्यादा होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, सिवियरिटी ज्यादा कैथोडिक एरिया की ज्यादा होगी। क्लियर? ओके सर, थैंक्स सर। यस सर। अच्छा, नाउ लेट्स थिंक ऑफ द प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या रह सकते हैं हम? कैन यू कम अप विद अ प्रिवेंटिव मेजर?
सर अगर हम ये galvanic corrosion इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी कम करते हैं, जैसे ऑयल यूज कर लें वाटर की जगह, तो वो फिर कम हो नहीं जाएगी देखें, कोरोजन। ऑयल यूज कर लें तो बड़ी वेग सी टर्म है ना। हवा के अंदर मॉइस्चर तो आप नहीं चेंज कर सकते, और ऑयल की जरूरत नहीं है अगर एप्लीकेशन पे, तो हम कैसे कर सकते हैं कंडक्टिविटी कम? सर पेंट की कोटिंग कर दें। अच्छा, गुड। और कोई? सर मेटल Yes, sir, जैसे sir. यूज करें जो मतलब है गैल्वेनिक सीरीज में अच्छे नजदीक मेटल्स होगी। वेरी यूज गुड। करें, आयरन ना यूज, क्या यूज करें? स्टील यूज करें, आयरन ना यूज करें। नॉर्मली यूज स्टील, आयरन यूज नहीं होता। यू नहीं जस्ट सर, से आयरन में ज्यादा होता है ना चेकिंग कर मतलब लेंगे कोरिजन, तो स्टील पे कम होगी। सॉरी, तो और अगर इलेक्ट्रिकल हम गोल्ड कॉन्टैक्ट यूज खत्म करें तो कर दें। गोल्ड पे वन बाय वन। ये जो पॉइंट आप ये दे रहे हैं ना कि आयरन में ज्यादा कोरोजन होती है और स्टील में कोरोजन नहीं होती, हैव यू एवर सीन एनी स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन जहां पे आयरन यूज हुआ और स्टील यूज ना हुआ? नो सर। सर देखें, अगर नाइफ जो हो वो आयरन की होगी तो उसमें ज्यादा कोरिजन हो जाएगी। बेटा थोड़े से भी एक होगा एक सिंपल से सवाल है आपसे, आपने Yes, sir. आयरन को यूज होते हुए कहीं पे देखा है? नहीं, हम इसीलिए दोनों सर नहीं बहुत सर, कम खाली एलॉयज यूज होते हैं। मिल के काम There are so many noises. If you could turn off your mics and only one person could talk at the moment. सर काइंडली सर एक बार सबके माइक ऑफ कर लें, आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा क्योंकि किसी का रैंडमली ऑन। I know. I would like you to do it first. Iron. Who was saying that iron would be more corrosive? सर फुरकान सर। जी फुरकान। फुरकान मुझे ये बताएं, आपने आज तक आयरन को कहीं स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन में यूज होते हुए देखा है? सर इसीलिए तो नहीं यूज होता कि क्योंकि वो करोड हो जाता है और उसकी एप्लीकेशन भी बहुत नहीं कम। नहीं, that is not the reason. सर रीजन ये है कि you need iron itself is not that mechanically strong as compared to steel, जिसमें कार्बन एलॉइंग होती है और सॉलिड सॉल्यूशन हार्डनिंग होती है, तो दैट्स अनदर फैक्टर। ठीक है, आयरन में कार्बन का यूज करने का मकसद ये है, लेकिन ये कहना कि आयरन ना यूज करें और स्टील यूज करें, स्टील ही यूज हो रहा है, आयरन यूज कहीं पे नहीं हो रहा, सो दैट्स नॉट अ सोल्यूशन। ठीक है, अगर यस आयरन सर। यूज ही नहीं हो रहा तो दैट इज नॉट अ सोल्यूशन। यूज तो स्टील हो रहा है, तो स्टील को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करें? एक तो आगे आगे पेंट करें। समवन सेड दैट द मेटल शुड बी क्लोज टुगेदर इन गैल्वेनिक सीरीज। और कोई सर सोल्यूशन? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग से आप यही कर रहे हैं ना, बेसिकली कवर कर रहे हैं। यस सर। अच्छा, लेट्स लुक एट द सॉल्यूशंस। One of you has suggested select combination of metals as close together as possible in galvanic series. Avoid unfavorable effect of small anode and large cathode. तो कोशिश ये करें कि you don't use सर a ये जो small. अभी आप बता रहे थे कि क्या नाम है, एरिया अगर उनका ज्यादा होगा, मतलब के दरमियान में गैप ज्यादा होगा तो फिर उनमें ज्यादा हो जाएगी, कोरिजन ज्यादा होगी कैथोड और एनोड में। जी, तो वो अगर हम गैप को कम कर दें तो फिर तो कम हो सकता यही है। तो पहला पहला क्या है? Select combination of metals as close together as possible in galvanic series. यस सर, सही हो गया। ठीक है, अवॉइड अनफेवरेबल इफेक्ट ऑफ स्मॉल एनोड एंड लार्ज कैथोड। ठीक है, स्मॉल एनोड और लार्ज कैथोड के यूज को रोकें। यू शुड गो द अदर वे अराउंड। इंसुलेट द कंपोनेंट्स फ्रॉम वन अनदर, अप्लाई कोटिंग्स, or you could install a third metal that is anodic to both metal in the galvanic series, कि इन दोनों से ज्यादा एक और एनोडिक मेटल जो इन दोनों के दरमियान में इंसर्ट कर दें, ऑलराइट, ताकि वो कोरोड हो। ऑलराइट। क्लियर इनफ? यस सर। यस सर। ग्रेट। सर प्रिडिक्शन ऑफ कोरिजन रेट वाला टॉपिक नहीं पढ़ेंगे हम?